Let us see the next question. X Limited has 10,000 equity shares. Current market price of equity share is 200. यानी आज का प्राइस हमको क्वेश्चन में दे रखा है P0 ₹200. Discounting rate cost of equity is 25%. Its expected earning at the end of the year is expected to be 5 lakhs. तो हमको ऐसा दे रखा है कि हमारा प्रॉफिट होगा 5 लाख रुपए at the end of the year. The company is likely to make investment at the end of the year 7,50,000. हम लोग हमारा बिजनेस एक्सपांड करेंगे और हमको इन्वेस्टमेंट करना है 7.5 लाख रुपए का. You are required to calculate, highlight the portion, value of the firm. As per that is Modi Ginani Miller approach, if the company is going to declare dividend per share 0, 20 and 50. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? आई जस्ट से समराइज द सेम. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन कि कंपनी के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000. देन P0 इज प्रोवाइडेड टू अस एज ₹200. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 25%. इन्वेस्टमेंट जो हमको करना है बिजनेस में वो है 7.5 लाख रुपए. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट से हमारा प्रॉफिट होगा an amount of ₹5 lakhs. ये जो सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसको यूज करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द करंट वैल्यू ऑफ द फर्म. यानी इसका मतलब ये है कि हमको कंप्यूट करना है NP0. दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स, एज पर अप्रोच वैल्यू ऑफ द फर्म का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड द सेम. N plus delta N into P1 minus I plus P divided by 1 plus K. This is the simple formula that we have for calculation of current value of the firm. Existing number of shares कितने friends? 10,000. We have that ready made. Investment कितना है? 7.5 लाख. Again that we have ready made. Profit कितना होगा? 5 lakhs. डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 25%. यानी इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास दो चीज नहीं है. एक तो क्या नहीं है? डेल्टा एन नहीं है. और दूसरा क्या नहीं है? P1 नहीं है. तो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से कैसे किया जाएगा दोनों का कैलकुलेशन. आपको कुछ लिखना नहीं, मुझे समझाने दो पहले. द फॉर्मूला फॉर P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K. हमारे पास P0 है, हाँ है. K है, हाँ है. और डिविडेंड हमको अलग अलग दे रखा है. So we can say that we have all the information in order to make the calculation of the P1 using this formula. उसके बाद we understand that as far as the delta N, that is change in the number of shares is concerned, it can be calculated like this. Investment minus retained earning. कैसे होगा? Profit minus ND1. प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिडक्ट करेंगे तो उतना रिटेन अर्निंग आ जाएगा, और वो रिटेन अर्निंग को इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट करेंगे तो हमारा न्यू इश्यू आ जाएगा. डिवाइडेड बाय क्या किया जाएगा? P1 इन ऑर्डर टू कंप्यूट द डेल्टा. सो स्टेप नंबर 1 में हम लोग P1 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. स्टेप नंबर 2 में डेल्टा एन फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. और उसके बाद विल अप्लाई NP0 फॉर्मूला टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द फर्म. So I request all of you to write down answer along with me. In order to compute NP0, we will follow under mentioned steps. उसमें लिखेंगे हम लोग A, calculation of P1,
B, calculation of delta N. C, calculation of NP0. ऐसा करके हमको 3 स्टेप में आंसर करना है, P1, delta N and NP0. So now step number 1, calculation of P1. For that friends, P0 is equal to D1 plus P1 divided by 1 plus K. P0 into 1 plus K is equal to D1 plus P1. So P1 is equal to P0 into 1 plus K minus D1. P0 is 200 into 1.25 minus D1. So we understand 250 minus D1. That is the way we can make the calculation of, say, the P1 as 250, 230 and 200 for different amount of the dividend per share. Step number 2 is calculation of delta N. This is the dividend. This is the profit. Dividend per share into number of shares will give the total dividend. Profit minus dividend is retained earning. 7,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें से 5 लाख का रिटेन अर्निंग है, तो 2.5 लाख का न्यू इश्यू करना पड़ेगा. प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है 250, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे? 1000. कैसे? 2,50,000 डिवाइड बाय 250. Similarly for the second one, it is 5 lakhs of the earning minus dividend of 2 lakhs, तो रिटेन अर्निंग हो जाएगा 3 लाख. 7.5 lakh minus 3 lakhs, that comes to 4,50,000 का रिटेन अर्निंग. हम से 4,50,000 का न्यू इश्यू करना पड़ेगा. 230 इज द प्राइस. सो डेल्टा एन हम लोग वो फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं एंड वी टेक इट 1957. लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट 5 लाख है, डिविडेंड भी 5 लाख है, तो रिटर्न अर्निंग कुछ नहीं बचेगा. तो जितना इन्वेस्टमेंट है उतना का उतना ही हमको नया इश्यू करना पड़ेगा. प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है 200 रुपए, so we have to issue 3750 shares. So write down answer of the question. Step number 1, calculation of P1. D1 is 0, 20 and 50. P1 is 250, 230 and 200. That is the way the P1 is supposed to be kept. Step number 2, calculation of delta N. In that, D1 is 0, 20 and 50. So delta N is 3750, 1957 and 1000. These are the 2 steps as per the calculation that I have showed you. Step number 3, calculation of NP0. NP0 का मतलब क्या है? Say the value of the firm. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? N plus delta N into P1 minus I plus P whole divided by 1 plus K. This is a simple formula to be applied. First situation में क्या है? D1 is 0. Existing number of shares कितने? 10,000. नए शेयर्स कितने इश्यू किए? 1,000. तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा इंटू 250 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना करना है फ्रेंड्स? 7.5 लाख रुपए को, और प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस K, that is 1.25.
This is the way we are supposed to calculate the answer. So 10 plus 1, 11. So 11,000 into 215, 27 lakh 50,000. Minus 7 lakh 50,000 plus 5 lakhs divided by 1.25. So 27.5 minus 7.5. 20 lakhs plus 5 lakhs. 25 lakhs. So we understand it is 25 lakhs divided by 1.25. So the answer is an amount of 20 lakhs. This is the way value of the firm will be calculated अगर dividend pay नहीं किया तो. Similarly, we'll make the calculation for D1 20, D1 50. The next one is D1 is 20. आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करके देता हूँ D1 20 में. Again, the same formula will be applied to calculate the answer. NP0 is equal to N plus delta N into P1 minus I plus P divided by 1 plus K. Existing number of shares कितने हैं फ्रेंड्स? 10,000 है. नए शेयर्स इशू कितने किए? 1957 इंटू P1 कितना है? 230 रुपए है. माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है? 7.5 लाख. प्रॉफिट कितना है? 5 लाख. होल डिवाइडेड बाय 1.25. So 10,000 plus 1957. So 11,957 into 230. That is the numerator 27,50,110. पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिर्फ 27,50,000 ही लिख रहा हूँ. वो जो ऊपर का थोड़ा मार्जिनल वैल्यू है ना, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन दैट वी हैड डन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स. इस वजह से माइनस 7.5 लाख प्लस 5 लाख होल डिवाइडेड बाय 1.10. सो 27.5 माइनस 7.5, तो बचा कितना? 20 प्लस 5, दैट इज 25 lakhs डिवाइड बाय 1.25. तो फाइनल आंसर क्या होगा? 20 लाख रुपए. दिस इज द वे NP0 इज कैलकुलेटेड. उसके बाद क्या करेंगे? D1 is rupees 50. In that case, the same working will be applied. NP0 is equal to N plus delta N into P1 minus I plus P whole divided by 1 plus K. What is N? N is 10,000. डेल्टा एन यहाँ पे क्या होगा? 3750 इंटू P1 कितना है? 200 रुपए माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है? 7.5 लाख. प्रॉफिट कितना है? 5 लाख. होल डिवाइडेड बाय 1.25. तो कैसे होगा? 10,000 प्लस 3750. सो 13750 इंटू 200, 27,50,000 minus 7,50,000 plus 5 lakhs. That comes to 25 lakhs. Divided by 1.25. So the final answer is rupees 20 lakhs. This is the way we are required to make the computation of the current value of the firm. And it is an amount of rupees 20 lakhs every time. You can have even a cross verification of the answer in this way.
that you can see that so the existing number of shares are given to us in the question as 10,000. Current market price is 200. तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो भी वो 20 लाख आ ही जाएगा, पर हमको आंसर पूरे ये मेथड से बताना पड़ेगा। तो फाइनली पूरे क्वेश्चन का समरी, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके ऊपर से हमको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है। हम लोग वो 3 स्टेप में करेंगे, P1 का कैलकुलेशन, डेल्टा एन का कैलकुलेशन, P0 का कैलकुलेशन। P1 using the formula of P0 is equal to D1 plus P1 upon 1 plus K. Delta N, that is, will make the calculation taking into account investment minus retained earning. तो उतना नया इशू डिवाइड बाय P1। उसके बाद लास्ट में NP0, that is current value of the firm, that is supposed to be calculated so for the different amount of the dividend per share. This is the way we are required to, that is, calculate the answer.